Recently, we had bad and good news in quick succession. It was first announced that Punjab's interim government had issued a notification stating that it had signed an agreement with the army to hand over to the latter more than 45,000 acres of land in the province's Bakar, Sahiwal and Kushab districts for corporate farming. A few weeks later, to my great relief, I learnt that Rafi Alam, the lawyer fighting cases to save Pakistan's agriculture from the treachery of our rulers, petitioned the Lahore High Court to have the notification withdrawn. The court stopped the transfer. Not many details are known about the accord that now stands suspended. Those who have followed our past government's experiments in agriculture and biotechnology shudder at the ruin they have brought in their wake. One gathers from media reports that the project was related to research and also for corporate farming. In the present circumstances, one can ask the Agriculture Department why this so-called barren land has not been put to good use. If the deal goes through, how will the corporate farmers cultivate it and make massive profits as claimed? Why is it devoid of livestock as was disclosed by the Livestock Department? Where have the forests disappeared? This can be asked of the Forest Department, which was also named in the suspended agreement. If the timber mafia has played a role in the deforestation process, was there official connivance in this anti-state activity? My major concern at this waste of a valuable state resource is related to land distribution. Land reforms have been blocked in the country by vested interests. But that should not prevent the government from giving small landless farmers its own land to cultivate on easy terms to enable them to grow food and earn a living. Our experiment with biotechnology hasn't been a happy one. Here, we must remember that Pakistan's experience of biotechnology research and its quest for a green revolution has not been a very happy one. Whenever there is talk of agriculture being made profitable, biotechnology has invariably figured. Our experiments with hybrid and genetically modified plants and seeds have proved to be disastrous. Not only has productivity fallen over the years, soil and seeds have also been eroded. As a result, agriculture now constitutes barely 22.6% of the national economy, whereas it was 43.1% in the 1960s. From 2011 to 2021, agriculture's share in GDP has fallen from 25.1% to 22.6%. A lesson we have learnt from our own experience is that we should not involve foreign companies or governments in those sectors of our economy which we have successfully managed with indigenous expertise. Certainly, innovations should be adopted, but only after they have been thoroughly tested under local soil and weather conditions by our own agriculturalists who have knowledge of tilling and farming. If any land has to be leased for corporate farming, it should be on stringent conditions with regard to the use or acquisition of biotechnology that covers seeds, fertilizers, and pesticides. Research should be carefully monitored and not done surreptitiously or in haste. Every project must benefit local labor. Many of us still remember how enamored our agricultural bosses were of GMOs, Bt cotton, and Roundup pesticide once upon a time. Biotechnology was worshipped as the miracle agent that would banish hunger from the world. What did we get? A bag full of failure that left behind a trail of destruction in our hitherto thriving agricultural sector, irretrievably damaging soil on account of the excessive use of pesticides and chemical fertilizers. Our seeds lost their robustness and human health was afflicted by unknown ailments. It all started in 2005 when some GMO was smuggled into Pakistan. In 2009, we entered into an agreement with China to grow Bt cotton. Failure didn't teach us a lesson and we went ahead and officially introduced GMO in 2010. We are still in search of the miracle. In 2020, the then cabinet celebrated its success in having agriculture and biotechnology included in CPEC schemes. The motives behind these moves are not clear at all. As I struggled to figure out what the government wants, I received a forwarded email from Rob Herring of Earth Conscious Life, warning readers about how inorganic food has gained acceptance as regular food. It fills us with toxicity and causes strange illnesses not fully understood by the medical profession.
The body is resilient to a degree, but that should not be an excuse for continuing down the path of consuming toxic food, he wrote. He reminded readers to think what it did to the immune system. I pondered for long over whether there was a connection between corporate farming, hefty profits, the use of toxic pesticides and enhanced productivity substances. Rob had answered my question. Published in Dawn, April 7, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. हाल ही में हमारे पास फौरी तौर पर बुरी और अच्छी खबरें थी। सबसे पहले ये ऐलान किया गया था कि पंजाब की अबूरी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इसने सूबे के इजला भक्कर, साहिवाल और खुशाब में कारपोरेट फार्मिंग के लिए 45,000 एकड़ से जायद जमीन फौज के हवाले करने के लिए फौज के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। चंद हफ्ते बाद मुझे ये जानकर बहुत राहत मिली कि पाकिस्तान की ज़राअत को हमारे हुक्मरानों की खियानत से बचाने के लिए मुकदमात लड़ने वाले वकील राफे आलम ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। अदालत ने तबादले को रोक दिया। इस मुआहदे के बारे में ज़्यादा तफसीलात मालूम नहीं हैं, जो अब मुअत्तल है। जिन लोगों ने ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी में हमारी साबिका हुकूमतों के तजुर्बात की पैरवी की है, वो इस तबाही से काम रहे हैं जो उन्होंने अपने नतीजे में लाई। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह मंसूबा तहकीक और कारपोरेट फार्मिंग से मुताल्लिक था। मौजूदा हालात में महकमा ज़राअत से पूछा जा सकता है कि इस नाम निहाद बंजर ज़मीन का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो कारपोरेट किसान उसकी खेती कैसे करेंगे और बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाएंगे जैसा कि दावा किया गया है। जैसा कि महकमा लाइव स्टॉक ने इंकिशाफ किया है कि ये मवेशियों से खाली क्यों हैं। जंगलात कहाँ गायब हो गए हैं? ये महकमा जंगलात से पूछा जा सकता है, जिसका नाम मुअत्तल मुआहदे में भी था। अगर जंगलात की कटाई के अमल में टिम्बर माफिया ने किरदार अदा किया है तो क्या इस रियासत मुखालिफ सरगर्मी में सरकारी मिलीभगत थी? एक कीमती रियासती वसाइल के ज़िया पर मेरी सबसे बड़ी तशवीश ज़मीन की तकसीम से मुताल्लिक है। मुफाद परस्तों ने मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स को रोक दिया है, लेकिन इससे हुकूमत को छोटे बेज़मीन किसानों को आसान शराइत पर खेती करने के लिए अपनी ज़मीन देने से नहीं रोकना चाहिए ताकि वो खुराक उगा सकें और रोज़ी कमा सकें। बायोटेक्नोलॉजी के साथ हमारा तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा है। यहाँ हमें ये याद रखना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी की तहकीक का पाकिस्तान का तजुर्बा और सब्ज़ इनकलाब की जुस्तजू बहुत खुशकुन नहीं रही। जब भी ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने की बात की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी हमेशा सामने आती है। हाइब्रिड और जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा पौधों और बीजों के साथ हमारे तजुर्बात तबाहकुन साबित हुए हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान न सिर्फ पैदावारी सलाहियत में गिरावट आई है, बल्कि मिट्टी और बीज भी ख़त्म हो गए हैं। इसके नतीजे में ज़राअत अब कौमी मईशत का बमुश्किल 22.6% है, जबकि 1960 की दहाई में यह 43.1% थी। 2011 से 2021 तक GDP में ज़राअत का हिस्सा 25.1% से घटकर 22.6% रह गया है। एक सबक जो हमने अपने तजुर्बे से सीखा है वो ये है कि हमें अपनी मईशत के उन शुबों में गैर मुल्की कंपनियों और हुकूमतों को शामिल नहीं करना चाहिए जिनका हमने मकामी महारत के साथ कामयाबी से इंतज़ाम किया है। यकीनी तौर पर इख्तिरात को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद ही जब हमारे अपने ज़री माहिरीन जो खेती बाड़ी और खेती बाड़ी का इल्म रखते हैं, मकामी मिट्टी और मौसमी हालात के तहत उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए। अगर किसी ज़मीन को कारपोरेट फार्मिंग के लिए लीज पर देना है तो उसे बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और हुसूल के सिलसिले में सख्त शराइत पर होना चाहिए, जिसमें बीज, खाद और हशराकश दवाएं शामिल हैं। तहकीक की एहतियात से निगरानी की जानी चाहिए और खुफिया तौर पर जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। हर मंसूबे से मकामी मजदूरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हम में से बहुत से लोगों को अब भी याद है कि एक ज़माने में हमारे ज़री मालिकान GMO, बीटी कपास और राउंड अप कीड़ेमार अद्वियात से कितने मुतासिर थे। बायोटेक्नोलॉजी को मजिजाती एजेंट के तौर पर पूजा जाता था जो दुनिया से भूख को ख़त्म करेगा। हमने क्या हासिल किया?
नाकामी का एक ऐसा बेग जिसने हमारे अब तक फलते फूलते ज़री शोबे में तबाही का एक निशान छोड़ दिया। कीड़े मार दवाओं और कीमियाई खादों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जमीन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारे बीजों ने अपनी मजबूती खो दी और इंसानी सेहत नामालूम बीमारियों का शिकार हो गए। ये सब 2005 में शुरू हुआ जब कुछ जीएमओ को पाकिस्तान स्मगल किया गया था। 2009 में हमने बीटी कपास उगाने के लिए चीन के साथ एक मुआहदा किया। नाकामी ने हमें सबक नहीं सिखाया और हमने आगे बढ़कर 2010 में जीएमओ को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ कराया। हम अब भी मुजज़े की तलाश में हैं। 2020 में इस वक्त की काबीना ने ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी को सीपैक मंसूबों में शामिल करने में अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। इन इक़दामात के पीछे के मुहर्रिकात बिल्कुल वाज़ेह नहीं हैं। जब मैं ये जानने की जिदोजहद कर रहा था कि हुकूमत क्या चाहती है, तो मुझे ज़मीन के शूरी ज़िंदगी के रोब हेरिंग की तरफ से एक फॉरवर्ड करदा ईमेल मौसूल हुई, जिसमें क़ारीन को मुतनब्बे किया गया था कि किस तरह गैर नामियाती खाने ने बाकायदा ग़िज़ा के तौर पर कबूलियत हासिल की है। ये हमें जहरीलेपन से भर देता है और अजीब व गरीब बीमारियों का सबब बनता है, जो तिब्बी पेशे के ज़रिया मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती है। उनका कहना था कि जिस्म एक हद तक लचकदार होता है, लेकिन यह जहरीला खाना खाने के रास्ते पर जारी रहने का बहाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने क़ारीन को याद दिलाया कि वो सोचें कि उसने मुदाफ़ती निज़ाम के साथ किया। मैंने तवील अरसे तक इस बात पर गौर किया कि क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग, भारी मुनाफा, जहरीले हशरकश दवाओं के इस्तेमाल और पैदावारी मादों में इजाफे के दरमियान कोई ताल्लुक है। रोग ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया था। अखज़ शदा बतारीख 7 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.